फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो पास पेपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आर प्रॉब्ली फ्रॉम 2021 आई गेस, और 2020, हाँ 2021 के हैं। The question number three part B कह रहा है discuss the extent to which the knowledge of income elasticity of demand for its product is likely to be more useful to a business than the knowledge of cross elasticity of demand. So so this is a good question, and we're going to answer this question in today's class as well. And then question 3 part B says, discuss the extent to which the concept of income elasticity of demand and price elasticity of demand might be useful. And then it says consider which would be more useful. ठीक है, तो एज एन इधर उन्होंने जो है वो रिलेटिव इम्पोर्टेंस मांगी है इस क्वेश्चन में आपसे एक्सईडी एंड वाईडी की, और यहाँ पे आपसे रिलेटिव इम्पोर्टेंस मांगी है पीडी की एंड वाईडी की। अभी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप पिछले 3 से 4 सालों के पास पेपर्स देख लो, 2022 से लेकर 2018 तक जाएं, तो ऑलमोस्ट एक अटेम्प्ट छोड़ के जो दूसरी अटेम्प्ट जून छोड़ के नवंबर या नवंबर छोड़ के जून जो आ रही है, in any variant, वो आपसे ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली टेस्ट कर रहे हैं about the relative importance. They're not just asking you the importance of PD or XCD, but they will probably ask you the importance of PD and YD, and then ask or XCD or XCD and YD, or PD or XCD or PD or YD, and then they'll ask you which is more which is more useful. ठीक है, तो ये 12 मार्क का क्वेश्चन है। अच्छा, अब पहले तो जो है ना, हम जरा पेपर फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्स में आपके पास किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, पहले तो आप ये समझ लें कि आपके पास जो पार्ट ए आएगा ना, जो पार्ट ए आएगा वो 8 मार्क्स का आएगा, और 8 मार्क्स का जरा समझ लेते हैं कि इसका ब्रेकअप क्या होगा। 8 मार्क्स में आपका जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 के मार्क्स होंगे वो 3 होंगे, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 के 3 होंगे, और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 के 2 होंगे। ठीक है, अब वी ऑल नो व्हाट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 इज, इट इज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 इज एनालिसिस, एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 इज इवैल्यूएशन। अब आपके जहन में ख्याल आया होगा कि सर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 जो इवैल्यूएशन है, assessment objective 3 जो evaluation है, that's basically, we all know what evaluation is, right? evaluation वैसे मुझे डिटेल में करवाना है, लेकिन अभी स्टार्ट हो गया है तो मैं बता रहा हूँ। evaluation का मतलब होता है क्रिटिकल, सिंपल है, it means critical argument, as in critical analysis होती है, critique होती है basically। और यार ये कह सकते हो it is basically क्या कहते हैं, अपना critiquing the narrative, कि for example if the narrative is that you say that doing A levels privately is good, and then you talk about why is doing A levels privately good, then you critique that narrative saying it's not always good, it's not always the best possible option there। But then evaluation का मतलब खाली ये नहीं होता कि आप other side of the story, because बहुत से लोग उसको समझाते हैं कि evaluation का मतलब होता है two sides देना, but खाली ये students को बताना कि जी it means two sides देना is not enough, because I mean you really won't understand the essence of evaluation, because evaluation में बहुत सारी चीजें आती हैं। So if you're saying that, so first of all you won't say that it's not good, you say it's not the best, because it could either be good, it could either be bad, but it could work both ways। And then part of evaluation would also be that you suggest an alternative way। Alternative suggestions भी आपको suggest करना evaluation में जरूरी होता है, because that is part of it। But evaluation कोई इतना simple नहीं है कि एक क्लास में मैं आपको बस मैं बोलूँ ये evaluation होता है। evaluation में काफी सारी चीजें आती हैं, ठीक है, but the main theory behind or the main premise for evaluation is that you're critiquing the narrative। But if you're critiquing the narrative, you're critiquing this argument that it's not good, so you need to then sort of list down all the possible arguments against, but that is just, and then towards the end probably form a judgment, and the judgment should not be on one side, because you're taking a stand here. You can't take a stand without, either if you're taking a stand, then you should have significant evidences given within your essay to prove that। सही है, your essay should speak up for that। If your essay is not living up to the argument that you're making, then there's no point in making a conclusion for which you haven't really provided evidences। So I'm saying, because evaluation का जो last part होता है, the last part of evaluation paragraph is the conclusion paragraph, or the judge where you make a judgment। So the judgment or the conclusion paragraph is sort of where you're ending your essay and you're also ending, so that's really sort of forms your last part of the evaluation। ठीक है, अब मैं आपको एक बात ही बताना चाह रहा था कि अब आपके जहन में एक सवाल होगा that 8 मार्क के अंदर इवैल्यूएशन कैसे होगी, बिकॉज अभी तक तो हमने 8 मार्क में इवैल्यूएशन नहीं देखी है, राइट? बिकॉज जो पुराने पास्ट पेपर के क्वेश्चंस है ना, उसमें तो हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते 8 मार्कर्स के अंदर। हाँ,
तुम assessment objective 1 और 2 तो fulfill कर सकते हो, but you can't really evaluate in an 8 marker question. Why? I'll tell you the reason why. First of all, you need to understand कि evaluation में पहले तो ये आपके में से ये मेरी Instagram की post से मैंने extract किया हुआ है. आपके पास for example ये command words दिए हुए हैं, let's say compare. तो compare का जो question है 8 marker में आ सकता है, ठीक है? um, as in it's simply, you know, they could ask you to compare between XCD and YD or something like that, or maybe demand pull cost push inflation. Consider का जो question है, consider whether, ये जो consider whether का जो question है ना, जब भी वो आपको बोलेंगे consider whether, that means that it would come as a 12 marker, ठीक है? As in they could, it could also come as an 8 marker as well. 8 marker में भी consider whether आ सकता है, लेकिन पूरा का पूरा कंसिडर वेदर नहीं होगा, वो इस तरह होगा एक्सप्लेन डिमांड पुल इन, इट कुड से एक्सप्लेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड कंसिडर वेदर पीईडी इज मोर यूजफुल देन वाईडी, इस तरह आ सकता है. देखो फिर से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ. एक्सप्लेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिकॉज 8 मार्क का क्वेश्चन एक्सप्लेन का होता है ना, तो अब कंसिडर वेदर भी 8 मार्कर में आएगा और कंसिडर वेदर 12 मार्कर में भी आ सकता है, ठीक है? So consider whether it could, you know, PD is more useful than YD. Define case studies में ज़्यादातर आएगा, demonstrate के questions case studies में आएंगे. यहाँ साइड में गाइडेंस भी दी हुई है कि इसका as in what is really expected of you here. So this is just self reading, ये self study करो, क्योंकि तुम लोग का वो level आ चुका है कि you can sort of make sense out of what I've written यहाँ पे, ठीक है? It's quite self-explanatory. Analyze, we all know analyze sort of as in अगर सवाल तुम्हारे पास आया कि analyze करें, so it would most probably be in an 8 marker. We know what analysis, we know what you know what does analysis mean, जिसके ऊपर काफी significantly बात हो चुकी है. Assess whether भी आपके पास जो है वो 8 marker में आ सकता है. और जब assess whether आएगा तो आपको जाहिर सी बात है, assess whether का मतलब है it could mean कि assess whether PED is more useful than XCD or XCD is more useful than YD, इस तरह आ सकता है. Calculate, but जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आएगा, consider whether, या आपके पास आएगा assess whether, whether जब आ जाएगा ना, assess whether, consider whether, इसका मतलब है कि आपसे ना evaluation briefly मांग रहे हैं, ठीक है? That's assessment objective 3. एंड आपको पता है कि 8 मार्कर के अंदर 8 मार्कर के सवालों में असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 इज फॉर 2 मार्क्स. अब फ्रॉम दिस अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स, पहले 8 मार्कर में असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 इवैल्यूएशन नहीं आती थी, तभी आप देखेंगे कि पहले जो 8 मार्कर के सवाल थे उसमें इवैल्यूएटिव कमेंट वो आपसे नहीं मांगते थे. अब अगर वो आपसे इवैल्यूएटिव कमेंट मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि यू हैव टू सॉर्ट ऑफ मेक अ जजमेंट एज वेल whether PD is more useful than XCD or XCD is more useful than YD, stuff like that. इसी तरह assess whether, इसके अंदर भी you have to sort of make and do some form of evaluation and make an informed judgment as well. As in the conclusion should be supported by evidence basically. Calculate or comment, case studies के अंदर आएगा. Comment whether again could also come in your 12 marker evaluation questions. Describe could most probably come either in case studies or 8 markers. Discuss तो आता ही 12 marker question है. Evaluate 12 marker question होता है. Explain 8 marker होता है. Basically command words में मैं आपको बताता है किस तरह आ सकते हैं for in your exams. Basically give का सवाल could come in case studies. आपको पता होना चाहिए कि what it means and as in what is the guidance that the examiner is expecting out of it. Identify case study, justify whether something could come like that. This will come in case studies as well or 12 marker question as well. But justification ke andar again evaluation would be, because if you are asked to justify something, maybe they could say that justify why D is more important than XCD, or maybe they could say justify whether justify whether the use of indirect taxes is the best way to reduce the production of demerit goods, or justify whether subsidies is the best option to increase the consumption of merit goods. So again, this could come as a 12 marker as well. But then again, when you're asked to justify something, it means that there is evaluation in it, because you cannot justify something without sort of giving an evaluative comment on it. And then again, the fact that you will have to make an informed judgment in the conclusion is also part of what has to be done in a justify sort of command word. Outline, state, case study, simple stuff.
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्कोर वेल इन इकोनॉमिक्स इज बिकॉज दे डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट दीस कमांड वर्ड मींस. तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख भी दिया है व्हाट इट मींस और गाइडेंस के साथ. यू हैव टू रीड देम, मेक इसको कॉपी कर लेना अपने रजिस्टर में और इसको अंडरस्टैंड करके पढ़ लेना. नहीं, इस पॉइंट तक आपको समझ आ जाएगा इसका मतलब क्या है. अब हाँ, जहां तक इवैल्यूएशन की बात है, इवैल्यूएशन क्योंकि अब हम डिस्कस क्वेश्चंस और करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझने लगेगा. जो डिस्कस क्वेश्चंस आते हैं वो इलास्टिसिटी और गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे ज्यादा आ रहे होते हैं और इकोनॉमिक सिस्टम्स पे आ रहे होते हैं बेसिकली. इकोनॉमिक सिस्टम्स, गवर्नमेंट इंटरवेंशन और इलास्टिसिटी. तो एनालिसिस क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, ये बता चुका हूँ. आपको पता है 8 मार्क्स के अंदर आपको इवैल्यूएटिव कमेंट देना होगा. स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल आर अनअवेयर ऑफ इट. आई एम प्रीटी श्योर most of you might also be unaware of the fact that you have to give an evaluative comment in an 8 marker. अब आपको मैं समझाऊंगा. पहले ये नहीं होता था. जैसे पहले 8 मार्क का क्वेश्चन देखें, 8 मार्क का क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए. एक्सप्लेन हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड्स दैट आर सब्स्टिट्यूट्स and those that are complements and those that have no relationship. So I mean this is a question that is more focused on assessment objective 1 and assessment objective 2. लेकिन ये पुराना फॉर्मेट है. इन द न्यू फॉर्मेट आपको इवैल्यूएशन देनी होगी. लेकिन तुम लोगों को एक सवाल आना चाहिए, इसमें हम इवैल्यूएशन क्या देंगे. इस तो क्वेश्चन ही ऐसा नहीं पूछा उन्होंने आपसे जिसमें हम इवैल्यूएट करें. इवैल्यूएट करने के लिए क्वेश्चन की नौयत भी तो इवैल्यूएटिव होनी चाहिए ना. मैं आपसे अगर ये पूछूं कि मैं तो क्वेश्चन ही इतना सिंपल है. क्वेश्चन सिर्फ आपसे कह रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में. यू नीड टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव ऑन एक्सईडी and how the concept of XCD can be used to distinguish between substitutes and complements and those that have no relationship. As in, you'll talk about the sign, you'll talk about the strength of the relation, you'll give the formulas, you'll signify about the values, you'll make the diagrams, and all of that. So yeah, and the fact that agar XCD 0 hoti hai, so the demand is perfectly inelastic with respect to the price of the other good, right? As in there is no relation. Let's say the price of milk goes up, so demand for chocolates, sorry, not the demand for watermelon will not change. So ये तो आप कर लोगे, बट इसमें इवैल्यूएशन नहीं आ सकती. तो आपके जहन में क्वेश्चन है ये कि सर फिर इवैल्यूएट कैसे करेंगे. देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. के अंदर you're talking about, इसमें आपको सीधा सीधा बताना होगा एक्सईडी में साइन का मतलब क्या होता है. you'll make the formulas, you will signify the values. अगर प्लस 1.5 है उसका क्या मतलब है, माइनस 1.5 का क्या मतलब है. you'll make the diagrams of the demand for a product with respect to the price of another product if xcd is greater than 1, less than 1 for substitutes and complements, and what do you mean by xcd equals to 0. so you'll talk about all this. ठीक है, तो 8 मार्क में तो आप ये करोगे इस क्वेश्चन में. तो इसके अंदर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 कवर होगा अकॉर्डिंग टू द ओल्ड फॉर्मेट. बट न्यू फॉर्मेट कह रहा है कि आपने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 भी बताना है. तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 तो इवैल्यूएशन है. तो मैं आपसे कह रहा था कि 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग 3 मार्कर, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 एनालिसिस 3 मार्कर, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 इवैल्यूएशन 2 मार्कर. आपके जहन में सवाल होगा कि फिर 2 मार्कर का क्वेश्चन किस तरह आएगा. मैं आपको बेसिकली बोल ये रहा था कि आपको पता होना चाहिए एज अ सीआई स्टूडेंट कि इसका ब्रेकअप क्या है. कि एग्जामिनर अगर आपको 8 मार्क में से 5 देगा या 6 देगा तो वो क्यों देगा ये आपको पता होना चाहिए. एंड यू शुड आल्सो बी एबल टू हेल्प अदर्स एंड टेल पीपल अराउंड यू बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट नो दैट. ठीक है, अब इधर आ जाते हैं. अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से होगा. अगर आप इसमें आए, if you look at the sort of you know this is the let me sorry this is your mark, this is your specimen paper. basically ये आपका specimen paper है. ठीक है, ये उसकी मार्किंग स्कीम है. अब फिलहाल इसमें आते हैं और इसको देखते हैं कि अब आपके पास क्वेश्चन किस तरह के आएंगे. सो आप यू शुड एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन लाइक दिस. स्पेसिमेन कब रिलीज करता है कैम्ब्रिज? कैम्ब्रिज स्पेसिमेन पेपर तब रिलीज करता है. स्पेसिमेन का मतलब होता है सैंपल पेपर, बिकॉज वो फॉर्मेट जब चेंज होता है तो तब फॉर्मेट चेंज हो गया तो इन्होंने स्पेसिमेन पेपर रिलीज किया. अब देखो 8 मार्क का क्वेश्चन किस तरह दिया. भाई सेक्शन ए की बात हो रही है, सेक्शन बी की बात हो रही है. सबको दिख रहा है सेक्शन बी में 8 मार्क का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. एन इकोनॉमी कंटेन्स जस्ट 2 सेक्टर्स एंड एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री. ये बाय द वे मैं तुम लोगों को असाइनमेंट में दे चुका हूं, कर चुके हैं. ये सवाल कह रहा है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन हाउ पीपीसी कैन बी यूज्ड टू शो द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब एक्सप्लेन का क्वेश्चन था ना, तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 और 2 तो यहाँ पे वैलिड हो गया. सही है ना, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 2 सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे. फिर देखो क्या बोल रहा है, एंड कंसिडर वेदर. देखो कमांड वर्ड पे फोकस करो. कंसिडर वेदर, अभी मैंने तुम लोग को बताया कंसिडर वेदर इवैल्यूएशन की साइड पे निकल जाता है मामला. एंड कंसिडर वेदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लाइकली टू रिमेन कांस्टेंट
if resources are reallocated from agricultural to industry. अब बहुत सारे बच्चों ने इस बारे में बात नहीं की थी कि whether they will be constant or whether it will be increasing, and why is that? Opportunity cost is more likely to be increasing rather than constant because the FOP will vary of industrial and agricultural. So ये वाली जो बात है ना, and consider whether, अब ये कंसिडर वेदर का कमांड वर्ड उन्होंने 8 मार्क्स में डाल दिया, और वो डाला ही इसलिए है ताकि असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 जो इवेल्युएशन है 2 मार्कर की, जो 2 मार्क्स रखे हैं उसके, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो सके। इसीलिए बी को छोड़ने, बी तो 12 मार्कर है, बी को मैं समझाऊंगा। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, 3 में देखो, 3 देखो, with the help of a formula explain the meaning of price elasticity of demand, sorry, price of supply, and consider which factors are most important. सही है? So which of the factors are most important in determining whether the PES is likely to be elastic or inelastic? So what they're saying is इसमें से कौन सा factor would be the most important in determining which would be elastic or inelastic. Again, evaluation. So and consider whether वाला जो part है ना, that's sort of relating you to provide an evaluative argument for 2 marks. ठीक है? हमेशा मेरी बात याद रखना कि कंक्लूजन जो होगा ना, जब भी आपके पास इस तरह के सवाल आएंगे, as in consider whether, जब भी consider whether का मतलब है कि they're asking you a judgment. So चाहे इस तरह के क्वेश्चंस हो, देखो मेरी बात गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। कंक्लूजन तो आपने देना ही होता है, बट कंक्लूजन वेरी करता है in accordance with the nature of the question. So for example, a question like question 3 part A, with the aid of a diagram explain how question number 3 part A, explain how concept of XCD can be used to distinguish. इसके conclusion के अंदर you don't have to form a judgment. इसमें judgment नहीं देनी है आपको conclusion में. You could probably just talk about that XCD hence is sort of really useful for businesses and XCD provide useful insight and stuff like that. Probably make a general conclusion and then end your answer. इसी तरह जो 3 part A है ये वाला, with the aid of diagram explain how consumer surplus is affected by a decrease in price of a luxury with many substitutes. By the way, price of a luxury with many substitutes means that a demand is elastic. So you could talk about that. Hence, you would conclude your answer by saying, hence to conclude, hence to conclude, price elasticity of demand has a key role to play in determining the size of the consumer surplus. And where the demand is elastic, the consumer surplus would be low. And even if the price goes, as in the extent of the consumer surplus would be low, or the size of the consumer surplus would be low if the demand was inelastic, and a fall in the price would increase the consumer surplus. But the extent of that increase or decrease in consumer surplus, sorry, अगर price जा रही है, नीचे जा रही है, तो consumer surplus जो है वो बढ़ जाएगा, and the extent of the increase in consumer surplus would also vary if the demand was elastic rather than inelastic. इस तरह करके आप एंड कर सकते हो. तो इसमें आपको कोई जजमेंट नहीं देना. लेकिन 8 मार्क, ये वाला जो 8 मार्कर है ना, ये वाला जो 8 मार्कर है, इसका जो 8 मार्कर है, क्वेश्चन 3 पार्ट ए देखो. Look at question 3 part A. This is saying explain the meaning of PES and consider which factors are most important in determining whether PES for a good is likely to be relatively elastic or relatively inelastic. Again, read this question. Explain PES and consider which factors are most important in determining whether PES for a good is elastic or inelastic. So what you'll, तो मैं इसमें PES के बारे में बताने, talk about PES, you'll analyze and evaluate, as in you'll provide all the knowledge and analysis on PES, and then you'll talk about all the factors that affect PES, and then you'll talk about which are more important. ठीक है? And then you'll conclude your answer, but the conclusion would sort of revolve around, as in these would be the closing statements that would revolve around the part where you're saying which factors are most important. आप इसमें generalized conclude, as in you can't give a conclusion that is not pertaining to the question itself. As in अगर आप बात कर रहे हैं कौन सा factor जो है वो ज़्यादा important है with respect to the demand, with respect to the fact that it can, making the supply more elastic or relatively inelastic or relatively elastic, then वो जो conclusion आप दोगे, that the conclusion that you will derive or the draw would be based on this part and consider whether.
इसी तरह क्वेश्चन 3 पार्ट बी अगर तुम देखो, assess the likely success the likely assess whether assess the likely success of the two government policies to make the price elastic supply of all agricultural products more elastic. Again, this is a 12 marker. इसमें evaluation would carry 4 marks. पार्ट बी जो होता है 12 मार्क का जो क्वेश्चन होता है, इसमें आपके पास 8 मार्क्स जो होते हैं वो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 के होते हैं, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 एनालिसिस। यानी आप ये समझ लें 4 मार्क्स बेसिकली असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 के होते हैं, 4 मार्क्स इसके होते हैं, और 4 मार्क्स जो होते हैं असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 के होते हैं आपके पास। ठीक है, सो इट्स बेसिकली या सो इसमें जो इवेल्युएशन के आपके पास 4 मार्क्स होते हैं अलग से फॉर 12 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर, चाहे आप आंसर लिखते, चाहे आप 8 मार्क का आंसर अटेम्प्ट करो या 12 मार्क का आंसर अटेम्प्ट करो, आपसे कोई भी ये पूछेगा आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो ये कोई स्ट्रक्चर, कोई सीआईज ने स्ट्रक्चर नहीं दिया, बट एक रूल ऑफ थंब है, एज इन ये कोई स्ट्रक्चर किसी ने बताया नहीं है, ये कॉमन सेंस है, ये अंडरस्टैंडिंग है, इट जस्ट मेक सेंस, एज इन दिस इज जस्ट एन एसे राइटिंग स्किल। बिकॉज जब सीआईज ने इतनी बातें कर ली कि भाई असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 एनालिसिस, फिर इवैल्यूएशन, अब आपको सबको पता है इवैल्यूएशन हम आखिर में करते हैं और कंक्लूजन आखिर में देते हैं, तो आखिर में कंक्लूजन आ जाएगा। फिर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, तो फिर उन दोनों असेसमेंट ऑब्जेक्टिव को हमने फर्दर वाइफरकेट करके बोल दिया कि ठीक है, उसका कुछ हिस्सा हम इंट्रोडक्शन में डाल देंगे, कुछ एप्लीकेशन में डाल देंगे, कुछ इवैल्यूएशन में डाल देंगे, एवेल्युएशन असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 निकल जाएगा। खैर, तो आपने इसमें आपने बोला कि यार शुरू में इंट्रोडक्शन देंगे, पहला आप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप एनालिसिस एप्लीकेशन में आएंगे, फिर आप इवैल्यूएशन देंगे, फिर आप कंक्लूजन देंगे, कंक्लूजन स्लैश जजमेंट। ठीक है, बिकॉज अब जजमेंट आएगी, पहले के सवालों में जजमेंट नहीं होती थी, लेकिन अब के जो सवाल होंगे आपके पास, अब के जो 8 मार्कर्स आएंगे उसमें जजमेंट आएगी, जिसमें से आज हम देखेंगे किस तरह में जजमेंट देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी कह रहा है डिस्कस द एक्सटेंट टू विच, एक दफा सवाल पढ़ लो बेटा, खुद से पढ़ लो सवाल, 2-3 दफा सवाल खुद से इंडिपेंडेंटली पढ़ो। सो इसमें अगर आप देखें, सो हाउ विल वी स्टार्ट दिस आंसर, तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही लिखेंगे, मैंने कह रहा मैंने ये लिखा है। So my way of writing is something that should ideally you guys should learn that as well. So how will we start this answer? We'll start this answer by saying income and cross elasticity of demand provides useful insights to business entrepreneurs in assisting them to make effective decisions. You don't need to copy this, copy mat karna, file upload ho jayegi tab copy karna, abhi sunte raho. So it provides useful insights to help business entrepreneurs in assisting them to make effective decisions. And for this reason, economists and business owners are concerned to know their XCD and YD of their business. Okay? Then you talk about, uske baad introduction mein definition. XCD measures the responsiveness of quantity demanded of a product to a change in the price of another good, while YD is a measure of sensitivity of quantity demanded to a change in income. अब ज्यादातर बच्चे शुरू करेंगे डायरेक्ट यहाँ से, XCD measures दिया है, YD measures this. ठीक है, I suggest कि don't just jump on to the definition itself. Because you could just write one line more and then jump to the definition. Provide a good start. Provide an answer by saying, because the question is directly, I mean, look at this nature of the question, which is more useful. So just try to revolve around the question itself. Try to think, मतलब इसका कोई best या ideal way नहीं है, but it will, because this is just a normative, in econ answers are normative in nature. So there is no best start to anything, but a good start could be that you, instead of directly jumping onto the definition, you'll write a line, 1 or 2 lines, where you talk about, where you write something that is providing more context or sense, that is providing more context and more sense to the question itself. सही है, or something, और एक और बस जबरदस्त चीज, or something that is making the examiner feel that उसने जो सवाल आपसे पूछा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। यानी इस अगर आप ये देखें टेक्निकली मैंने किया क्या है, मैंने क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को सिग्निफाई किया है, because question is talking about how it is so useful, right? Whether YD is useful or whether XCD is more useful, but then I have signified
I've amplified the importance of it by saying, yes, this is really useful, or this is something that this is a correct question that you have asked me to do too. यानी आप एग्जामिनर को बोल रहे हैं, हाँ आपने सही सवाल पूछा है. तभी मैंने लिखा है कि income and cross demand provide useful insights to business entrepreneurs in assisting them to make effective decisions, and that's enough. ठीक है, just a line. And then you talk about XCD measures. अब फॉर्मूला देना है दे देना, अगर तुम फॉर्मूला नहीं भी देते तो तब भी कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज डेफिनेशन जो है वो फॉर्मूले को ही, सिर्फ डेफिनेशन और फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है. डेफिनेशन इसी फॉर्मूले के नीचे एक लाइन खींच देगी और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देगी, वरना इट्स द सेम थिंग. ठीक है. सो एंड देन अब इसमें ना सवाल में अगर आप फिर सवाल दोबारा पढ़ेंगे, आप इंट्रो पैराग्राफ लिखने के बाद दोबारा सवाल पढ़ना, बिकॉज मैं जब इंट्रोडक्शन इसका लिख रहा था ना, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई रोट द इंट्रो एंड बाय द एंड ऑफ इट ना, आई फॉरगॉट व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग मी. मैं भूल गया था, मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा क्वेश्चन. तो ये सबके साथ होता है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप किसी और डायरेक्शन में निकल जाएंगे. यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक. टॉक अबाउट द फैक्ट दैट सो इसमें जो गलती आप लोग कर सकते हैं, द पोटेंशियल डेंजर और द रेड फ्लैग वुड बी वेयर यू जस्ट write, for example, you write everything down that is related to XCD. जैसे अगर आप XCD के बारे में, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 पार्ट है, ये XCD के बारे में ना आप सब कुछ लिख दें. XCD के बारे में एक एक चीज बता दें. XCD के बारे में साइन क्या बताता है, कोफिशिएंट क्या बताता है XCD का, सब कुछ आप XCD के बारे में लिख दें. आपने लिखना होगा बट लिमिटेड इंफॉर्मेशन. व्हाई? बिकॉज द क्वेश्चन इटसेल्फ इज टॉकिंग अबाउट द यूजफुलनेस or the business relevance of XCD and YD, right? So yes, you will talk about the knowledge behind, you'll talk about knowledge of XCD YD. You'll provide, XCD tells us the sign tells us whether you could talk about sign tells us, whether they are substitutes and complements, that is a relationship, and the coefficient tells the strength of that relationship. ठीक है ना? And then there's no need to analyze. फिर मैंने लिखा है analysis of this through formulas and calculation not required. ये नहीं कि तुम फॉर्मूले में डाल के दिखा दो. फॉर एग्जांपल, if the price of coke is rising and the demand for Pepsi is falling significantly, so it shows that Pepsi and Coke are very strong. भाई क्वेश्चन ये नहीं है, ये रेड फ्लैग है, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि क्वेश्चन वो नहीं है. क्वेश्चन क्या है? Discuss the extent to which the knowledge of income elasticity of demand is more useful to a business than knowledge of cross elasticity. So they're asking you how useful XYD is for a business and how useful XCD is for a business, and then to comment whether YD is more useful than XCD. So yes, you will introduce XCD, introduce YD, but introduce it. Don't write a thesis on XCD and YD. Diagram for fit diagram, वो जो diagrams वगैरह हैं, diagrams showing the strength of relationship and all of that, it is not required. Required नहीं है. अगर तुम मना दोगे तो कोई गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन required नहीं है. Limited knowledge provide करो कि एग्जामिनर को बस तुम ये बता दो कि देखें XCD ये होता है. अब बताने का मतलब खाली डेफिनेशन से बताया नहीं जाता या फॉर्मूले से नहीं बताया जाता. थोड़ा सा तो आप उसके बारे में लिखेंगे ना. Write a few lines of what XCD is. Just provide some information on what XCD is. Tell the examiner that it could be the as in it could be substitutes or it could be complements, and or whether it could be strong substitutes or strong complements, but there's no need to elaborate a lot on it and give examples. But if you want to make the diagram, you can make the diagram. If you don't want to make the diagram, still that's your call. ये कुछ चीजें हैं जो आपको on the spot decision लेनी होंगी, but I would say कि ना बनाओ, जल्दी से फौरन to the point transition करो. Why? Because knowledge तुम लोग को अगर याद हो, मैंने business relevance XCD YD की बहुत डिटेल में करवाई है ना. पीछे हमारे पास XCD YD की business relevance अच्छी खासी, as far as I remember, मुझे तो याद है बहुत डिटेल है. ये पूरी business relevance ही चल रही है YD की. ये in itself आपके पास 1-1.5 पेज में आ जाएगी, even XCD की भी. ठीक है. इसी तरह YD के बारे में जल्दी से बताना. What YD is, you will talk about then you talk about XCD. अगर 0 होगा तो unrelated होगा. जल्दी. Then you'll quickly move on to what YD is telling you. मैंने लिखा हुआ, you will repeat the above for YD too. You'll tell कि YD का sign normal inferior बताता है. The coefficient tells whether it's a normal necessity or normal luxury, whether it's inferior elastic or inferior inelastic. If YD equals to 0, then it is perfectly income inelastic, and that is enough. That's more than enough. You don't need to say if the incomes are falling, then the demand for luxuries will fall. This shows that it is normal good, and if it is normal elastic, then it would have a higher sensitivity to a
change in income. So you don't need to dive into all those details. That's a red flag for the examiner. That is immediately the examiner will say, यार आगे आंसर पढ़ने का फायदा ही नहीं है, उसको मजबूरी में वो पढ़ेगा आंसर क्योंकि उसको आपको मार्क्स भी देने, लेकिन वहीं पे वो अलर्ट हो जाएगा कि यार नाउ ही इज गॉन, ही इज लॉस्ट ट्रैक. सो डोंट डिसअपॉइंट हिम. एंड for that reason it is very important for you to learn or master the art of giving the of essay writing in economics. अब बहुत से बच्चे मुझसे आर्ग्यू करते हैं कोई इकोनॉमिक इंग्लिश का पेपर थोड़ी है ये भाई. इंग्लिश इंग्लिश मैं कब आपसे कह रहा हूँ फैंसी वर्ड्स यूज करो या आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. मैं तो आपको सिर्फ ऐसे लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपने लिखना है. अब उर्दू में तो नहीं देना ना पेपर, अंग्रेजी में ही देना है ना. समझ रहे हो ना, एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? ठीक है. उसके बाद देन आर यू गाइस देयर? Yes. Yes, sir. the next then what you will do is कि तुमने थोड़ी बहुत XCD YD की इंफॉर्मेशन दी, ठीक है. अच्छा, अगर आपसे सवाल ये कहते हैं ना कि डिस्कस वेदर PD इज मोर इंपॉर्टेंट देन YD, तब भी तुम यही करते. PD के बारे में भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन देते एंड देन यू वुड हैव quickly moved on to the importance. So the same applies to other questions as well. Then you will transition your essay. देखो मैंने क्या लिखा है. You will transition your essay to the importance of the value of XCD and YD, as in you'll quickly talk about how relevant XCD is to the business or how relevant YD is to the business. लेकिन again मैंने एक बात यहाँ पे बहुत important लिखी है, but again here read the question, as in it's important for you to go back to the question after every 2 paragraphs, because question is not asking you to directly talk about the importance of XCD and YD. As in question आपसे directly ये नहीं कह रहा कि XCD और YD की importance बताओ. So how will you actually do that? What I've written is stop and think. Because these are the techniques that I use and I'm telling you to use as well. Stop and think. Because stop and think. सोचो question क्या बोल रहा है. What is it actually asking? So stop and think means actually पूछ क्या रहा है आपसे. आपसे क्या पूछ रहा है actually? The question is asking you discuss the extent to which knowledge of YD is more useful than knowledge of XCD. वो आपसे ये पूछ रहा है कि किस हद तक knowledge, the extent, to what extent is the knowledge of YD more useful than the knowledge of XCD. So yes, it is asking you to talk about how useful YD is for businesses and how useful XCD is for businesses. But that's not what it's only asking you. It is asking that, but that's not what it's only asking you. It's asking you to talk about which is more useful. Talk about that as well. If you waste your pages to and act smart in the exam, act over smart in the exam by providing irrelevant details regarding, you mention Pepsi Coke examples and you talk about everything that is not what the examiner wants you to write, that's a red flag for the examiner. Okay? So don't provide those red flags to him. So again, the actual question is asking you which is more useful. It's talking about the extent to which is more valuable. So it could be either of the two. XCD could be more valuable as well. YD could be more valuable as well. And then that's what the examiner is asking you. कि यार आपके ख्याल में क्या है, YD ज्यादा यूजफुल है, XCD ज्यादा यूजफुल है. अब बच्चे इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो ले कहते हैं जी इन माय ओपिनियन YD इज मोर यूजफुल, इन माय ओपिनियन XCD इज मोर यूजफुल. भाई क्यों? इन माय ओपिनियन आई थिंक दैट, ऐसे कभी भी लिखो. आई थिंक दैट XCD is more useful. I think that YD is more useful. In my opinion, XCD is more. कभी भी इस तरह लिखो. In my opinion, I think that तो नहीं लिखेंगे आप कभी भी. You will not use these words. How will you write it? I'll tell you how will you write it. First of all, to tackle this, यानी इस तरह क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, first analyze the usefulness of YD as question. अच्छा देखिए सवाल, so इसमें पहले आपको वैसे XCD की इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए YD की, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ. Should we talk about XCD first, importance of XCD first or YD first? Should we talk about the importance of XCD first or YD first? Okay, this is the question. XCD. गलत रानिया, YD. क्योंकि सवाल आपसे कह रहा है discuss the extent to which the knowledge of income, elasticity of demand is more useful. क्वेश्चन के हिसाब से हम अपने आंसर को डायरेक्ट करते हैं. मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ discuss the extent to which YD is more useful than XCD. So probably वैसे तो it won't really matter, but yes, it could matter. It won't, but it could. The examiner has not mentioned us or told us whether it matters or not. But if I was the examiner, it will matter. If I was a decent examiner with superb level of knowledge, it will matter to me then. As in, because समझ में आ रही है बात? So you start off your answer by saying, फिर तुम क्या बोलोगे? Again देखो,
This is where you need to prove your economical skills. इससे ऊपर तुमने सिर्फ brief introduction देना है और बहुत basic बातें बतानी है about XCD and YD, and then you quickly move on. You quickly transition to the importance of YD and XCD. You will not provide so much detail about what XCD and YD is. Just some basic information, and that is it. As in, you know what XCD is, and then you know what YD is. Start off by saying you start off by saying that YD provides useful insights for the business, which are as follows, and then you tell all the useful insights that YD could provide for a business, which are जो हम discuss कर चुके हैं पिछली classes के अंदर कि how YD could be so important for businesses, that it basically tells the information is very relevant for the business in preparing for expected booms and recessions in the economy. And if the business has calculated the YD for to be, let's say, +4 or +3, and if it means that it is a normal good, it's income elastic demand, it's a luxury good, and if it's expecting a boom with incomes to rise, then the quantity demanded would rise by 20%, and in which case the business must prepare for increasing the level of stocks and output and employment, to meet that higher demand. And so yeah, I'm discuss kiya tha. It helps the business, it helps the business to plan ahead. Plan strategic decisions, plan its production capacity ahead, and all of that, so that it could increase its revenues. And YD also helps businesses. And if it's an inferior good with income elastic demand, and if it's forecasting a boom, so it means that the demand is going to go down, then in that case the business must prepare itself by reducing output, maybe reducing the employment levels. And it could probably focus on other ways to stimulate demand through advertising and all of that. Ye sab humne discuss kiya tha, to sort of reduce the negative impact that recessions could bring in. So that's how YD is useful. फिर तुम लिखोगे, but फिर तुम लिखोगे, समझ में आ गई? So that's how. Then once we are done, फिर हमने YD की बात कर ली. Then once we are done, we move on to the importance of XCD. But this is how ideally we should transition. Direct हम शुरू नहीं हो जाएंगे. On the other hand, XCD shows that. ऐसे थोड़ी शुरू हो गए तुम. On the other hand, XCD shows that. पहले YD के बारे में बात करें, खत्म किया, अगले पैराग्राफ से बच्चे शुरू हो जाते हैं. XCD shows that. कोई ट्रांजिशन तो हो. ट्रांजिशन कैसे करेंगे आप? ट्रांजिशन करेंगे बाय सेइंग रियलिस्टिकली स्पीकिंग. दिस इज, अब जरूरी नहीं है तुम रियलिस्टिकली स्पीकिंग लिखो. मैं लिख रहा हूं बिकॉज आई फील दैट दिस इज हाउ आई वुड हैव रिटन इट. सही है. बट कुछ चीजें तो बिल्कुल करनी ही करनी है, और कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती है टू हेल्प impress the examiner. So realistically speaking, YD is not the only elasticity that is useful for businesses. Instead of me directly jumping on by saying XCD is important because of this and this and this, I would have said that YD is not the only elasticity that is useful for the business. XCD is of great importance for businesses too. Okay? Then tell why. Talk about the importance of XCD. That why is XCD so important? We already talked about why XCD is so important. Because maybe if we know that it's a complementary good with an XCD of, let's say, -3, so business should reduce the price, and maybe reduce the price of the printer ink to sort of increase the demand for printers. Or agar, if you know that the XCD is +3 and the product is a very strong rival or a substitute, in that case the business could reduce the price in order to increase total revenue and your profits as well. Or but then with the fact that it could result into a price war must be taken into account as well. And if the elasticity is +3, 4, or 5, it means that there's a very strong substitute. So the business should, if the business knows it's as in if the business knows or has the knowledge of XCD, if the business has the knowledge of if the business has the knowledge of its XCD, if the business has the knowledge of its XCD, then it could help businesses make decisions that it could tell the business could engage into. Yeah, we talked about non-price competition. It could improve advertising quality, customer branding, and service. And the reason why we engage in non-price competition is to eliminate the risk of a price war. And then our aim should be to reduce the substitutable nature of the product, because reducing the substitutable nature of the product would make our product less cross elastic, right? So that is why we should reduce the substitutable nature of the product, and that's how we could increase revenues in the long term. Not focus on price cuts, instead focus on non-price competition. And then we will talk about the fact that let's say if the business
If the rival brand, let's say Pepsi, reduces the price, then Coke should either match that price cut or undercut that price cut, right? So we already talked about that, so that it could maintain its revenues. अगर कोक जो है वो अपनी, अगर आपका ब्रांड, राइवल ब्रांड जो है वो अपनी प्राइस गिरा देता है, तो आप ऐसे बैठे तो नहीं रहोगे ना हाथ पे हाथ रख के। आपको तभी हम कहते हैं कि एक्सीडी एक्सीडी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो रिएक्टिव डिसीजंस के लिए हेल्प करती है। एक्सीडी हेल्प्स अस इन मेकिंग रिएक्टिव डिसीजंस। हर दफा रिएक्टिव डिसीजंस नहीं, रिएक्टिव का मतलब है कि बिजनेसेस रिएक्ट करते हैं। अगर आपके राइवल ने प्राइस गिरा दिया है और आपको पता है कि, आपको तो नहीं पता ना राइवल प्राइस कब गिराएगा, लेकिन अगर राइवल ने गिरा दी प्राइस, तो फिर उस केस के अंदर आप रिएक्ट करोगे ना, या तो अंडरकट करोगे या मैच करोगे। या जरूरी नहीं है कि एक्सीडी सिर्फ रिएक्टिव डिसीजंस के लिए हेल्प करे, एक्सीडी could also help in making proactive decisions as well. So reactive का opposite क्या होता है? Proactive. देखो, लिखने के लिए कंटेंट चाहिए ना। बच्चों की कंप्लेन आप देखें ऐसी आ रही होती है, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखना है भाई। ये अब जो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ रिएक्टिव और प्रोएक्टिव, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास कहाँ से आती है? हाउ डू आई नो दैट? डू आई ड्रीम अबाउट इट? नो, आई रीड अबाउट इट. I read from various books, and that is why I'm giving it to you. Obviously, you are not required. Your instructor is required to provide this information to you, so that you can write it in the exam. But the problem is that kids are like, we don't know how to structure the answer. या हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखना है। उसके लिए अगर आप, अब मेजॉरिटी बच्चे ना एक्सीडी वाईडी पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया, डायग्राम पढ़ लिया, they think that they'll be able to pass the exam. They fail the exam. They get D's. Why? Because examiner भी बेवकूफ नहीं है लेवल्स का। वो आपको इतने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं देगा। तो आप ये लिख, तो एक्सीडी जो है ना, वो आपको रिएक्टिव डिसीजन में भी हेल्प करता है, प्रोएक्टिव डिसीजन में भी हेल्प करता है। प्रोएक्टिव डिसीजन इसलिए बिकॉज इफ यू नो दैट यू हैव अ स्ट्रांग राइवल and you know that the rival could reduce the price, then you will engage in non-price competition. You will already try to reduce the substitutable nature of the product through branding and advertising, and that's a proactive decision. Proactive का मतलब है कि कुछ गड़बड़ होने से पहले ही आप डिसीजन ले रहे हो to reduce the damage. Reactive का मतलब है कि अब गड़बड़ हो गई है, अब to reduce the damage आप डिसीजन ले रहे हो. So reactive versus proactive decision, ये दोनों वर्ड्स यूज करना सही है एग्जाम में। तो ये आप ना एक्सीडी वाईडी की बात कर लोगे ना। अब हम आएंगे विच इज मोर इम्पोर्टेंट। आपने एक्सीडी बता दिया, वाईडी बता दिया, अब आप आओगे विच इज मोर इम्पोर्टेंट। तो देखो, एक मेरी बात याद रखना, यू डू नॉट नीड, ये मैं ऐसी मेरे जहन में एक कोट आ गया था तो मैंने लिख लिया कि यू डू नॉट नीड टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम, बट ट्राई टू बी गुड इनफ। नॉट परफेक्ट बट ट्राई टू बी गुड इनफ, ठीक है? दैट्स व्हाट योर एम शुड बी। नॉट परफेक्ट बट गुड इनफ। अंडरस्टैंड? मेक सेंस? Let's talk about the comparative analysis of its relative importance for YD and XCD. ठीक है, अब हम comparative analysis की करते हैं. Let's compare that whether YD is more important or XCD. But how will you write it down? Please try to focus on how am I forming or creating an answer. Talk about is what we'll say. देखो exam में start कैसे किया? What I've written is that both elasticities are useful if not equally useful. देखो सवाल क्या बोल रहा था आपसे? Discuss the extent to which is more useful na. So what I've written is both are useful if not equally useful for business. The importance of either one cannot be undermined. दोनों की importance को undermine नहीं किया जा सकता. Economists could argue. Economists could argue. ये बहुत common word है जो हम अक्सर अपने आंसर में यूज करेंगे और आप भी करेंगे. Economists could argue that if the economy is subject to severe cyclical fluctuation. Cyclical fluctuation का मतलब होता है कभी अच्छी जा रही है कभी नीचे, कभी यानी booms and recessions basically. Economists could argue that if the economy is subject to severe cyclical fluctuations, where booms and recessions are common है यहाँ पे, let's say हमारी country में economy में, then knowledge of YD could be of likely more useful या more importance. मैंने ये नहीं लिखा कि it will be, मैंने लिखा could be. हम argue कर सकते हैं कि ये हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि ये होगा, मैंने कहा ये हो सकता है। और लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये हो सकता है, तो मैं रीजन दे रहा हूं कि ये कब हो सकता है। अगर आप इवैल्यूएशन में आते हो, अगर आप इवैल्यूएशन की उसमें आ जाओ, इसमें लिखा हुआ है कम्युनिकेट रीजन जजमेंट। जजमेंट फॉर्म कर रहे हो रीजनिंग के साथ, कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो उसके पीछे कोई आपके पास यानी उससे पहले आपके पास कोई वो नहीं चाहिए, you should have some sort of an argument before making any judgment. उसके बाद you will say that if the economy is subject to severe cyclical fluctuation where booms and recessions are common, then you say that knowledge of YD could be of likely more usefulness, because अब सुनो कि वो यूजफुल क्यों होगी दादा, बहुत गौर से सुनना. I want attention here, okay?
Because now listen, because even if the business reduces the price of its luxury product, suppose करो हमारा एक luxury product है, हमने उसकी प्राइस गिरा दी है to increase quantity demanded, ठीक है, and total revenue by pulling customers away from its rival. So let's say we have a luxury product जिसकी जो XCD है that is पॉजिटिव है. सो अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव है तो सब्सटीट्यूट होगा. तो अगर पॉजिटिव 4 सपोज करो लग्जरी प्रोडक्ट है, कोई स्मार्ट वॉच है, उसकी एक्सडी पॉजिटिव 4 है. सो इन ऑर्डर टू सॉर्ट ऑफ increase revenues, we reduce the price. हमने प्राइस गिरा दी है ताकि अब now that will pull away the customers from the rival, obviously. So the objective is to pull the customers away from the rivals. And economy, अब मसला ये है कि ये हमने कर तो दिया, हमने प्राइस तो गिरा दी, but the economy is close to a recession. इकोनॉमी रिसेशन के करीब है. अब मैं अगर प्राइस गिरा भी रहा हूँ स्मार्ट वॉचेस की, तो ठीक है, कस्टमर ज्यादा स्मार्ट वॉचेस, मेरी स्मार्ट वॉच ज्यादा खरीदेंगे, तुम्हारी नहीं खरीदेंगे, बिकॉज मैं और तुम बहुत क्लोज राइवल्स हैं, तो मेरे पास आ जाएंगे कस्टमर्स. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इज जैसे कि वी नो कि अ लॉट ऑफ पीपल बाय Chinese smart watches because they are, probably not as close, but some, we could argue that they are a competition to the Apple watches, or the Chinese AirPods are a competition to the original AirPods. Not a very close competition as compared to, obviously you can't really match the exact feel, but then people are still buying them because they still feel that they're wearing or they're using an AirPod, even if it's a Chinese copy of it. So it would obviously, लेकिन but the problem is कि अगर recession आएगा, भाई अगर recession आ जाएगा ना, तो मैं Chinese AirPod भी नहीं लूंगा, सीधी बात है, क्योंकि recession आ रहा है भाई. recession में incomes गिर रही हैं, जब income गिरती है, income is a factor affecting demand. So ठक करके क्या होगा, left पे income left पे चले जाएगी, demand curve for smart watches will fall down. The demand for smart watches will fall down for me as well, for you as well. It will fall down for Apple AirPods as well, for Chinese AirPods as well. So here we could समझ आ रहा है. So इसमें मैं क्या लिखूंगा, total revenue and sales would decline since a recession would lead to a fall in demand, and consumers willingness and ability to buy luxury goods will fall. ज़ाहिर है मेरा good normal good है, अगर recession आ रहा है तो recession में even though if I am acting smart, let's say I'm acting smart and I'm reducing the price of my good because I want to attract the rivals customers, but then this business decision would probably not end up in my favor. It will end up in some, it will end up, it's not that it will not end up, it will end up, but then the fact that when a recession comes the demand will fall down, that could outweigh the fact that I reduce the price and then, समझ रहे हो मेरी बात को? So इस केस में हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी, वो भी मैंने लिखा है, वी कुड आर्ग्यू, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट वी कुड आर्ग्यू दैट इफ द इकोनॉमी सब्जेक्ट टू सिवियर ग्लोबल सिस्टम, दिस कुड पॉसिबली हैपन. क्या ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Then what you could write is समझ आ रहा है? Then what you could write is booms or recessions. Yes, sir. Okay, good. Booms or recessions could, okay, so then what you will write is that booms or recessions could increase or decrease the booms or recessions, booms, पता नहीं क्या आपको नजर आ रही है? Why is this constantly popping up? Gee, booms or recessions could increase or decrease the demand for product severely by impacting total revenue and profits, despite the businesses implementing the appropriate pricing strategy. So even though if I am implementing the correct pricing strategy, so that my demand for my product goes up, but then a boom or a recession could sort of spill water on my strategy, because the thing is that, let's say, based on my XTD coefficient, because even though the business makes an effort to reduce the substitutable nature of its product, which has a high positive XTD strong so for example, if I have a high strong positive XTD, if अगर मेरा एक बड़ा strong rival है, let's suppose Coke is a very strong rival for Pepsi, and what happens is that this pricing strategy could sort of fail if there's a recession. इस केस में तुम्हारे ख्याल में if Nixer or Cedar or LGS or Beacon are just thinking about if they are basing their decisions, based on, so अब आप खुद सोचो कि कोविड 2020 में चले जाओ, 2 साल पहले आ जाओ, 2020 हिट हुआ पाकिस्तान में, धड़ 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 धड़
पाकिस्तानी इस्लामियात के एग्जाम्स कैंसिल हुए, बच्चे खुश हो गए, सब कुछ वो वाला सईद गनी जब चीफ मिनिस्टर था पाकिस्तान में, सॉरी चीफ मिनिस्टर कह रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर था, वो वाला टाइम याद करें आप। तो सब एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे, वो वाला टाइम सबको याद है ना, जब कोविड तेजी से फैल गया था पाकिस्तान के अंदर। एंड इमेजिन दैट let's say Nixer or Cedar, either one of the two reduces their price. So let's say LGS reduces the price, and LGS is like, oh, you know what? We've reduced the price of our college. Now almost entire students from Beacon House will come to us, and they open another campus. एक और कैंपस खोल लिया based on that. Because XCD ने तो यही सिखाया है ना आपको। XCD क्या सिखा रहा है कि अगर आप प्राइस को कम करोगे और strong positive coefficient between LGS and roots is, let's say, +5, and if LGS reduces the price, if LGS, because let's say the teachers of roots and LGS are same, or the teachers of Nixon and Cedar are same, so एक ही बच्चे को वो कहता है हमें तो एक ही एक्सपीरियंस मिल रहा है, दोनों अच्छे हैं, दोनों कॉलेज अच्छे हैं, टीचर्स भी सेम है, तो वहीं वहां जाओ जहाँ स्कॉलरशिप मिल रही है, पैसे कम देने पड़ रहे हैं, तो उसका मतलब स्ट्रॉन्ग राइवल्स हैं दोनों दोनों कॉलेजेस, तो आप चले जाते हो, कहीं भी चले जाते हो, ठीक है। लेकिन कोविड इसी डिसीजन की बेसिस के ऊपर आपके एक्ससीडी ने तो आपको ये सिखाया ना कि यार आप प्राइस गिरा दो, आपको पता है, आप कोफिशिएंट देखो, अपना कोफिशिएंट की बेसिस पे डिसीजन लो। आपने प्राइस गिरा दिया, आपको पता है क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, सो वर्क ऑन द प्रोडक्शन साइड, सप्लाई साइड। निक्सर ने और एलजीएस ने दबा के हायरिंग शुरू कर, टीचर्स हायर कर रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, एक और कैंपस खोल लिया, खोल के बैठ गया, पता चला इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, और रिसेशन आ गया, इनकम्स फॉल हो गई, पीपल डोंट हैव द मनी टू सेंड देयर किड्स टू कॉलेज, सो दे आर डूइंग देयर लेवल्स प्राइवेटली, इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर देम नाउ। कॉलेज होगा तो फीसें आएंगी बच्चों की, तो ट्यूशन टीचर्स को पैसे मिलेंगे ना, तो अब कॉलेज खोलना वाज अ रॉन्ग डिसीजन ना, बिकॉज दैट डिसीजन वाज बेस्ड ऑन एक्सीडिंग ओनली, but the fact that the product was also income elastic cannot be ignored. So the decision should not only be based on XCD ना, YD की बेसिस से भी डिसीजन आपका बेस्ड होना चाहिए था। यही क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि डिस्कस द एक्सटेंट टू विच इज मोर यूजफुल। मेक सेंस नाउ और नॉट? सो फिर आप ये लिखेंगे, ठीक है, that's done, फिर आप ये लिखेंगे, then you'll talk about the fact, because you're saying that YD could be more useful, and to some extent that is correct. YD का थोड़ा सा relative importance हम कह सकते हैं कि ज्यादा हो सकती है, ये मत लिखना होगी, कह सकते हो कि ज्यादा हो सकती है, because मसला पता है क्या है? मसला ये है कि चेंजेस इन इनकम आर नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। देखो निक्सर, एलजीएस, रूट्स ये अपनी प्राइसेस कम कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर स्टूडेंट्स टू कॉलेजेस, बट दे कैन नॉट कंट्रोल द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, and their sales, or whether more students come to them or not come to them, is also is not only dependent upon what fees they are charging, it's also dependent upon what is the income of their parents, and the income of their parents is directly dependent upon the economic situation of Pakistan and the employment levels of Pakistan. So if there's a recession, the income levels of the parents will go down for almost every parent, and then the average incomes will go down, and that is going to impact the number of sales for any college in Pakistan, irrespective of whatever decision they have made to reduce the prices. So this is what you need to talk about. So this is because changes in income are not within the control of the business and depend on the economic condition of the economy. Also, it is not in control of the business to control the price of its substitute rivals good. And for that reason, it is said that both XCD and Y. Okay. So ये दूसरी जो important चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये बात बताना चाहिए कि XCD और YD दोनों हम कहते हैं कि they are important for making reactive business decisions. Both प्रोएक्टिव भी हो सकता है, लेकिन रिएक्टिव इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने जो रिएक्टिव लिखा है वो किसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। बेसिकली मींस बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अगर बिजनेस बी को करना ही चाहिए कि बिजनेस, अब हमको पता है कि यार फर्म में अपनी प्राइस रिड्यूस कर चुका है, एंड देन नाउ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग, फर्म बी विल मैच और अंडरकट दैट। अगर फर्म में अपनी प्राइस रिड्यूस कर चुका है और ए और बी सब्स्टिट्यूट्स हैं और स्ट्रॉन्ग राइवल्स हैं, तो फर्म बी को भी अपनी प्राइस कट कर देनी चाहिए ना। तभी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्म बी जो है वो एक रिएक्टिव डिसीजन लेगा अब, बिकॉज the quantity demanded of firm B is dependent upon the price of firm A. Now, if the firm A has reduced the price, the demand for B could go down, and that's why it's a positive XCD, which shows that they both are substitutes and rivals. And then, so what I'm saying is that business B will take a reactive decision now. Reactive in the sense के it will now reduce or undercut the price or match the price. ठीक है? That's what I was saying. समझ आ गई? इसको पढ़ लेना, तुम पढ़ोगे तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैंने जितना
बड़ा मैं एक्सप्लेन करते में हमें टाइम लग रहा है, लिखते में इतना नहीं लगेगा। लिखा मैंने कुछ भी नहीं है, देखो ये इतना से ही लिखा हुआ है, बस इतना ही लिखा हुआ है मैंने, ज्यादा कुछ नहीं है ये। सही। और 12 मार्क्स में वैसे भी आपको ज्यादा लिखना ही होता है। 12 मार्कर में आपको आपको 1.5 पेज का आंसर नहीं, लंबा ज्यादा लिखना होता है आपको 12 मार्क्स में। तो एक्सपेक्ट के या यू नीड टू राइट कितना लिखना होता है, वी डोंट नो, आई डोंट नो, दे हैवंट गिवन अस अ नंबर कि 2 पेज 3 पेज 4 पेज। लेकिन तुम्हें खुद फीलिंग आ जाएगी भाई, तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी तो तुम ज्यादा लिखोगे ना। अब तुमने आज प्रोएक्टिव रिएक्टिव सीख लिया, अब किसी को नहीं पता होगा प्रोएक्टिव रिएक्टिव क्या है, वो थोड़ी लिख कर आएगा। तो इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज, द मोर नॉलेज यू हैव, सो जस्ट ट्राई टू इंक्रीज योर राइटिंग स्पीड। ठीक है, राइट फास्ट एंड देन इट विल ऑल गो वेल। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम नहीं लिख पाओगे या तुम्हारा पेपर टाइम पे खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा पेपर टाइम पे। जिस इंसान की नॉलेज बहुत होती है ना, उसको पेपर भी टाइम पे खत्म करना आता है। वो कहते हैं यार 6 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। वो मैं तुम लोग को टेक्निक सिखाऊंगा जब हम आखिर में जब कर, बिकॉज उसका भी एक है कि केस स्टडी के अंदर कुछ क्वेश्चंस को लिमिट कर दो उसमें, और एक अपना आंसर बना लो जो तुम्हारा बेस्ट आंसर है, उसमें अपनी सारी नॉलेज प्रोवाइड कर दो, और we'll see that towards the। एक चीज अब ये देखने मैंने क्या लिखा हुआ है। So what I've written over here is that let's imagine that x and y are complements। ठीक है, x और y complements हैं, and if the firm is selling complementary goods x and y, ठीक है, then even xcd could help make। अब जरूरी नहीं है कि xcd हमेशा रिएक्टिव बिजनेस डिसीजंस में हेल्प करे। xcd से आप प्रोएक्टिव डिसीजन भी ले सकते हो। कैसे? बिकॉज कैसे ले सकते हो प्रोएक्टिव डिसीजन? बिकॉज let's say if you reduce the price of x to boost the sales of y, you reduce the price of printers to boost the sales of the printer ink, let's say. So basically, however, but the point is, the problem is that however, if x and y both are normal luxuries with a yd greater than 1, then a fall in income could reduce sales of both x and y as well. तो यहाँ पे मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर आप x की प्राइस कम करते हो ताकि quantity demanded for y goes up, because x and y are basically jointly demanded complements, but they x and y both are normal luxuries, and if income goes down, it could reduce the sales of both, it could reduce the demand for x and the demand for y। ठीक है, सो फिर तुम लिखो, फिर तुम ये एग्जांपल दोगे और तुम बोलोगे इसका मतलब ये हुआ, in this case we could argue that being aware of its yd is equally important। आप XCD की बेसिस पे सारे डिसीजंस बेस नहीं कर सकते। Being aware of your YD is equally important as well। ठीक है, and to some extent more important लिख सकते हो तुम, and to some extent मैंने बोला है more important, because मैंने रीजन भी दिया है why, फिर मैंने जस्टिफाई भी किया है इसको। देखो जस्टिफाई कैसे किया मैंने, because in this case we could argue that being aware of its YD is equally important and to some extent more important and useful, since 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 and in that sense, yani when I'm proving something, when I'm proving an argument, that's how you write। Since का मतलब है कि I'm actually trying to prove a point, because you can't make a judgment without proving it। Since and in all I've mentioned, in that sense means in that context, what I'm saying, since and in that sense total revenue could overall decline because an economic downturn, despite business making an appropriate proactive decision टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो क्या मतलब हुआ कि भाई मैंने एक अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया, अप्रोप्रिएट प्रोएक्टिव डिसीजन लिया कि भाई मैं इंक की प्राइस गिरा दूं ताकि डिमांड फॉर प्रिंटर्स बढ़ जाए। बट प्रॉब्लम ये हुई कि इनकम्स गिर गई ना, तो बेसिकली प्रिंटर की सेल्स भी कम हो गई और इंक की सेल भी कम हो गई। सो आई, और इस बेसिस पर कि यार इफ द प्राइस गोज, सो इफ आई एम बेसिंग माय लेट्स सपोज मैं अपनी सप्लाई चेन, मैंने हायरिंग, रॉ मटेरियल की परचेजेस, वेयर हाउस की परचेजेस, फैक्ट्री नहीं खोल ली, if I am basing all my decisions on the fact of XCD alone, that's not correct. That's not a right strategy, because income has an effect on demand as well. So I should consider that as well. Okay? Now, whether XCD would be more important or YD could be more useful depends upon a lot of factors. It's not always that YD would always play a more significant role or XCD would always play a more significant role. It could vary actually. So there's no one answer to this। ये लिख कर आओगे तुम, ये लिख कर आओगे। आगे मैंने इस बात को लिखा भी है। अब मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वांट यू ऑल टू पे अटेंशन टू दिस। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। हाउएवर इफ, ये जो हाउएवर इफ का जो स्टाइल होता है ना, इधर एग्जामिनर को आप पॉज, आप बोलोगे हाउएवर इफ, तो अब मुझे लगेगा कि आप कुछ आप बोलने वाले हो, समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू प्रूव और यू आर ट्राइंग टू मेक एन आर्गुमेंट है। हाउएवर इफ
coefficient of XCD, look at this, the coefficient of XCD is greater than the coefficient of YD. For example, if XCD is -4 while the YD is plus 1.5, this means that demand for, okay, so for example, let's take an example, ये good A है and good B है. So yeah, they both are basically A and B are complements, but they are luxuries as well. A and B are luxuries and they both are complements to each other. The XCD of A with respect to the price of Y is -4, since they are complements, it's greater than 1. While the YED of let's say A is plus 1.5. अब मुझे बताएं किसका कोफिशिएंट ज्यादा है. XCD of A with respect to the price of B -4 है. YD of A जो है वो +1.5 है. किसका कोफिशिएंट ज्यादा है? XCD का जो कोफिशिएंट है वो ज्यादा है. वेरी गुड, XCD का कोफिशिएंट ज्यादा है. आप इस बात का मतलब समझते हो? द कोफिशिएंट ऑफ XCD being more greater than the coefficient of YD. What does this mean? What is XCD telling you? XCD tells you how sensitive demand of A is with respect to price of B. XCD is telling you how sensitive the demand, the quantity demanded for A is with respect to the price of B. While YED is telling you how sensitive the quantity demanded of A is with respect to income. XCD के coefficient YD के coefficient से बड़ा है. This is telling, although they are elastic, but then it's telling that XCD, the coefficient of XCD is telling that the demand for A is more sensitive to the price change of its rival than to the income change. Factors affecting demand. Income is a factor affecting demand. Price of substitutes is also a factor affecting demand. But which factor affecting demand will have a greater impact on the demand for the product? That's what, देखो ये तुम्हें अब ना आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा होगा. ये जो तुम लोग पढ़ रहे हो ना, ये जो बच्चे खाली नोट से पढ़ते हैं ना, और जो सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं सिर्फ फॉर्मूले में, और ये बातें सारी फॉर्मूलाज में होती है, वो तो फेल ही होगा ना. अभी तुमको मैंने बिल्कुल अलग किस्म का पर्सपेक्टिव दे दिया कि देखो, इनकम भी एक फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी एक फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है. उन दोनों में से कौन सा फैक्टर मोर रेलेवेंट है, ये डिपेंड करता है एक्ससीडी वाईडी के कोफिशिएंट के ऊपर. बिकॉज इनकम माना इनकम फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है, बट इनकम किस लेवल तक इम्पैक्ट कर सकती है डिमांड को, ये तो वाईडी का कोफिशिएंट बताता है. और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ किस हद तक डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये तो पीडी बताता है. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट किस हद तक अफेक्ट कर सकता है डिमांड को, ये तो एक्ससीडी बताता है. तो अगर मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना है कि भाई मेरा प्रोडक्ट इनकम को लेकर ज्यादा सेंसिटिव है, टू इनकम के चेंज होने से डिमांड पे ज्यादा इन्फ्लुएंस आता है, या राइवल के प्राइस चेंज होने से ज्यादा इन्फ्लुएंस आता है, तो मुझे उसके कोफिशिएंट को देखना पड़ेगा. तो तुम यहाँ पे यही लिखोगे, मैंने एग्जैक्टली यही बात लिखी है. Demand for good A is more sensitive to change in price of complement than incomes. Hence, in this case, again justifying, hence in this case, XCD is likely to be more useful. मैंने ये नहीं बोला XCD will be more useful. मैंने फिर नहीं बोला XCD will be more useful. मैंने अभी भी नहीं बोला XCD will be more useful. मैंने बोला is likely to be more useful. दोनों वर्ड्स के अंदाज में फर्क है, बात करने के अंदाज में फर्क है. अगर ये मैथ या अकाउंटिंग का सब्जेक्ट होता ना, फिर तो क्वांटिटेटिव जजमेंट होती कि भाई कितने मार्क्स मिले, वो फॉर्मूलाज और उसी हिसाब से मार्क्स मिलते फॉर्मेट्स के हिसाब से. तो ये तो क्वालिटेटिव जजमेंट होती है इसमें. ठीक है, कंक्लूजन क्या दोगे? कंक्लूड कैसे करोगे इसको? अब इधर आ जाओ, ऊपर इधर आओ. इवैल्यूएट में, यानी इवैल्यूएट मतलब इवैल्यूएशन इटसेल्फ, इवैल्यूएशन हो या डिस्कस क्वेश्चन हो, ये तुम्हारे कोर इवैल्यूएशन 12 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं. यू शुड गिव डिस्कस क्वेश्चन हो या इवैल्यूएट का क्वेश्चन हो, दोनों का मतलब बेसिकली मोर और लेस सेम ही होता है. You should give a balanced account of both sides, for and against an issue of argument, and give a reasoned, well-framed conclusion. Well-framed conclusion.
अब आपके जहन में सवाल था ना कि वेल फ्रेम्ड कंक्लूजन किसे कहते थे, तो उसे कहते थे, अभी अभी आपको बना के दिया है मैंने। ठीक है, इसी तरह इवेल्युएट में यू शुड मेक अ स्टेटमेंट as in reason statement and include a supported conclusion or merits and otherwise something else, more or less they both mean the same thing। ठीक है, अगर आप इवेल्युएशन के अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ, तो communicate reason judgment and reason conclusions and decision that are based on arguments। argument का मतलब है कि argument का मतलब है एक आपने बात बोली है, मिसाल के तौर पे आपने कोई स्टेटमेंट दिया है जिसकी एक वेटेज है, दैट्स व्हाट एन आर्गुमेंट इज। आर्गुमेंट का मतलब होता है कोई पॉइंट, इकोनॉमिक्स में आर्गुमेंट का मतलब होता है कोई पॉइंट, एनी पॉइंट दैट हैज अ वेटेज। सही है, रीजनड कंक्लूजंस, इफ योर जजमेंट इज नॉट रीजनड, it should have a basis। So for example, if you read this conclusion what I've written, both XCD and YD are useful for businesses. However, the relative importance for each cannot be ignored. And despite in certain circumstances, YD is more useful as mentioned above, we cannot undermine the usefulness of XCD in helping make crucial business decisions। देखो सवाल देखो क्या है, कंक्लूजन देने से पहले सवाल दोबारा पढ़ लेना, सवाल दोबारा पढ़ो। Discuss the extent to which knowledge of YD is more useful than knowledge of XCD। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ठीक है, कुछ सर्कमस्टांसेस में YD इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन XCD को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। मैं ये देखो ये कंक्लूजन दे रहा हूँ, कंक्लूजन इज अ जजमेंट। जजमेंट, हाँ भाई, मेक अ जजमेंट, पास अ जजमेंट, एंड जजमेंट शुड नॉट बी वन साइडेड, रिमेंबर दैट।